Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start off our discussion with the next subsection of biology, which is about enzymes. First of all, I would like to give you the big picture of enzymes. इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे एंड सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर of enzymes, and thirdly we will talk about the mechanism of action of enzymes, and fourthly we will discuss the factors affecting the rate of enzyme action. We will construct a table which would be explaining this particular area, and then last of all we will be understanding different enzyme inhibitors by constructing a flow sheet. ये हमारी आज की big picture है, और through the same token of this big picture I would like to tell you कि एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से एरियाज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इस बिग पिक्चर में जो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है, यू कैन से दिस इज़ 5-star एरिया फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड सेकेंडली जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन है, ये भी एक 5-star एरिया है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन एंजाइम इनहिबिटर्स, ये भी एक 5-star एरिया है या हाई यील्ड एरिया है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो हम इन सारे सेक्शंस को, ये सारे एरियाज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली इन 3 एरियाज़ को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिस्कस करेंगे. Now let's start off our discussion with the introduction to enzymes. First of all, we have got definition. By definition, the enzymes